there are 9 categories. Quickly, I want to go through them. They are in a very serious situation. Even in believers, if you commit shirk, finish. You are not repented, end of the story. So that is, they say, who is the good and most clever businessman? They say the one who knows what is one thing which can destroy my business. He should know what is that one thing. When something might harm 10%, 5%, what is one thing which completely, they say, this is a businessman should know. सबसे कामयाब कहते ताजिर हुआ है कि उसको ये पता हो कि वो कौन सी एक चीज है जिससे सारा मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा, उसका तो वो तो कभी नहीं करनी चाहिए. So one thing which you do not want to do at all, because there is no any kind of flexibility in akhirah for that, is shirk, associating partner with Allah subhanahu wa ta'ala in His qualities, in His sifat, in His zat, worshipping anyone. Second is the disrespect, saying disrespectful, kufriya words towards the divine or towards the prophets. These are very, very serious things actually, that if a person does not repent before, they have no chance. But for believers, alhamdulillah, you are all believers. There are 9 categories if you put Quran and Hadith together, where it is said, on the day of judgment, La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah will not even speak to them. So much displeased. Imagine if someone is not good terms, even in enemy or actually whatever, they might still speak to you. Oh, I don't like you. Why you done this? You shouldn't have done this. Your question. That is one level. That is another level that Allah says, I don't want to even have a word with them, not even ask them. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah will not speak to them in any way. Wala yuzakkihim. And He will not purify. They will not be purified, because people will go with bad things, and with mercy of Allah, they can be purified on that day through punishment or some kind of hardship. Wala yanzuru ilayhim. And Allah will not even look towards them with the glance of mercy. Wala yuzakkihim. No, they will be purified. This means wala hum azabun alim. They have to go through a very painful. Allah is so displeased with them, because things which they did, they didn't need to do that really. 9 people. So you don't want to be a mushrik, don't want to be a gustakh, because that's out of Islam and forever a person condemned. So that's one thing. Other is these 9 things which you, in spite of believing that you have no escape, you have to go towards hellfire. There is no actually escape in the way. So very briefly, यानी 9 वो बंद, एक तो मुशरिक और गुस्सा उनके तो है ही नहीं, उसके अलावा 9 मुसलमान हैं कि जिनको अल्लाह पाक ना उनसे बात करेगा, ना उनको गुनाहों को माफ़ करेगा, ना उनकी तरफ नज़र रहमत करेगा. तो कम अज़ कम ये 9 चीज़ों से हमें ज़रूर बचना चाहिए, ताकि हम उनमें ना चले जाएं कि वहाँ पे शोर करें, वहाँ कुछ भी ना हो हमारे साथ हो. कौन से लोग हैं? Number 1, he's saying that that person who is a tradesman, who is businessman, and who takes false oaths to sell or buy or do something transaction or to sell his actually material, whatever actually in that matter, because he can sell anyway.
When those people who swear oath by Allah, people don't believe on them anyway because they know they are just frequently they are using this word. That's why Sayyidina Ali radiallahu anhu said, speak truth so that you don't have to swear an oath. Your word can be an oath if you speak truth. But if you are lying otherwise and only one time, yes, and now I will swear, or the other person thinks, oh yeah, he might be actually lying as well even. Many people you speak to and they say, to tell you the truth, meaning before they were all lying. So now they made their mind up, let me tell you the truth, this is the thing. Let's be frank. So firstly you are being hypocrite, now you are being frank. So there are things, so there is double, you may say, thing, a double game and a double life a person is living. So Prophet Islam, आपने फरमाया एक शख्स जिसका ना अल्लाह का नज़र रहमत फरमाएगा, ना उसको पाक करेगा, ना उसके गुनाह उसको माफ़ करेगा, ना उससे बात करेगा, वो कौन है? जो माली मामलात में, ज़मीन के मामलात में, माली मामलात में पैसे बेचने के लिए चीज़ें, झूठी कस्में और झूठी कस्में मतलब यानी उठाता रहता है और इस तरह की चीज़ें और झूठे वादे और मानत में ख़यानत और ये और वो, all these things. Another one is the one who Allah gives blessings and he becomes arrogant and he shows off arrogantly. For example, Allah gives you enough to wear clothes and you wear clothes to show off people, and with as Prophet Islam said, with arrogance, if someone drapes down their clothes, because in Arab culture, whoever was like a big tribe man and leader, to show their leadership, they used to drape their clothing below the ankles on the ground, and that was a sign of their, actually you may say, majesty and things like fashion. Well, fashion is that he is a very rich man, like nowadays sometimes people do. So it can be different things. For girls, for females, it can be the other way around. That if they actually expose, that is bad for them. But the point is that blessing is given to you and you use it rather than being humble and sharing with the creation, caring with the creation, you become arrogant and put them more down. Oh, you are nothing, I have everything, and I have this, and you know you've not brought it, Allah has given you. तो ये शख्स फरमाया एक तो झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला, दूसरा जो है अल्लाह नेमतें दे, खूबसूरती दे, कपड़े दे, माल दे, गाड़ियाँ दे, और बंदा तकब्बर यानी अपने आप को बड़ा समझ के दूसरों को समझ, दूसरे के पास नहीं ये होना चाहिए जी, मेरे जो कपड़े हैं ये किसी के पास नहीं होना चाहिए, ये भी तकब्बर की निशानी है। ऐ जी मैं जरा सूट पाया ना कोई और ना लवे, छाप दा ना दसियो कित्थों लिया, क्योंकि मेरे को नहीं होना चाहिए दसियो, ये भी तकब्बर की निशानी है। क्योंकि जो जिसको नेमत मिलती है, a person who have blessing, जिसको शुक्र, वो मखलूक की कदर, वो समझता है दूसरे को मिले, मुझसे भी बेहतर मिले तो मैं वो खुशी होती उसको या दूसरे को देने से। और ये तकब्बर यानी वो अपने आप को समझता है, हालांकि वो भी उसी जग मट्टी से पैदा हुआ है जहाँ से वो पैदा हुआ है, वही मट्टी से पैदा बंदा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें, आपने चीज़ें भी इस्तेमाल की, बताया भी, और वैसे बुज़ुर्ग गुजरे हैं, औलिया गुजरे हैं, बड़े बड़े महंगे कपड़े, लेकिन तकब्बर नहीं किया उन्होंने, शुक्र करना, मखलूक को भी उसमें शरीक करना। So second category is that if Allah has given you any blessing, don't show off to others, don't put down others के मैं के पास ये देखो मेरा सोने का ब्रेसलेट, ये मेरी चीज़ है, वो मेरी चीज़ है, वगैरह वगैरह चीज़ें, to just to show off। ठीक है, ये है, wear it, enjoy it, be thankful, और दूसरों के साथ भी अच्छे तल्लक रखो कि don't actually think lower of them
and don't you think high of yourself as a. Number 3, the one who does a favor to someone and then keeps sending reminders. यानी एहसान करके जितलाने वाला किसी पर नेकी कर दी और उस पर बार बार उसको सारी ज़िंदगी मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने वो किया तुम्हारे लिए, तो एहसान जतलाने वाला. बिकॉज यू हैव डन a good thing, a favor for Allah's sake, Allah will reward you. It's no use reminding him. It's like you have done something good to a house number 9 and you keep sending a reminder to house number 10. You've not done anything for that. You have done favor for Allah's sake. So Allah knows, and you can mention to Allah, Ya Allah, I have done this good, Allah will reward you. You've not done it for that person. So it's no use putting him down in mind, because that will also destroy your good deeds. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. Allah says, speaking in a good way, comforting way, honorable way is better than actually giving something, doing a favor, and then reminding and putting that person actually under undue pressure of your favor. अल्लाह ने फरमाया कि अगर एहसान करके जतलाना है तो वो उससे बेहतर है तुम बात लोगों से अच्छी तरीके से कर लिया करो, और ना तुम बस करो नेकी किसी से. हम समझते हैं हम ही खिला रहे हैं लोगों को. हमारे एक बुजुर्ग थे, तो वो एक बंदा गया कुछ रोटी के टुकड़े लेके, मैं चिड़ियों को डाल रहा हूँ, तो वो बड़ा खुश हो गए, मैंने चिड़ियों को यानी खाना डाला है ये. तो उन्होंने फरमाया कि तुम तो एक दिन गए डाले, बाकी 6 दिन कौन उनको देता है? तुम आप भूल गए तो भूखी मार जाएंगी, तुम्हारे ही रिज़्क़ पर हुई तुम. तो ये तो अल्लाह का फेवर है कि अल्लाह आपसे ले रहा है. Imagine where many people, we are feeding animals here, there. Okay, you will do 1 day, 2 day, a week. What about the other day? If they just depend upon your giving, तो वो तो starve कर रहे हो. So rather, you are under favor of Allah, that Allah is using you to feed them. Rizq उनका है, वो खा रहे हैं. तो हम तो कुछ नहीं अपना क्या कर सकते हैं. So do good deeds, but don't send reminders. But Allah Pak knows, Allah doesn't need any reminder. If you're doing it for Allah subhanahu, alhamdulillah, that's good. And दूसरों के लिए भी नेकी करें, लेकिन उनको जितना ही नहीं आसान. But in this, the mashayikh say, the one who is done good with, he has a role as well, कि उसको भी शुक्र गुजार होना चाहिए. वो दूसरे को गुनाहगार ना बनाए नेकी भूल के. वो भी याद, वो इससे पहले कि वो जतलाए, वो याद दिला दिया करे कि भाई आपने मेरे साथ नहीं किया, अल्लाह पाक जज़ाए खैर. उसको जतलाने की ज़रूरत ही ना पड़े. हम भी ऐसे लोग हैं, कोई नेकी इतनी ज़्यादा कर जाता है, बस ऐसे मुंह बंद रखते हैं. गुनाह से नहीं मुंह बंद रखना, लेकिन शुक्रगुजारी से बंद नहीं. हम जो दिस इज़ फॉर द पर्सन हु हैव डन, यानी फेवर इज़ डन टू. अल्लाह लाइक्स थैंकफुल पीपल. People who are mallam yashkurin nas, lam yashkurillah. Allah says, firstly be thankful to people, then you will be thankful to me. तो जिसके साथ नेकी हुई है, उनको भी कोई बंदियाई, कोई अच्छाई, कोई इंसानियत होनी चाहिए कि भाई हम क्यों दूसरों को, उसको माइंड उसका शुक्रिया करें, उसको कहें आपने मेरे साथ ये किया, बड़ा मतफ़ाया, ये हुआ, मुझे ये फ़ायदा हुआ. जिस तरह औलाद के साथ माँ बाप करते हैं उनको, तो अब औलाद को चाहिए शुक्रगुजारी करे. दोस्त के साथ करता है. अगर बीवी खिदमत करती है तो खामिद को अप्रिशिएट करना चाहिए. अगर खामिद उस पर खर्च करता है तो बजाय उसके कि मैं तुम पर खर्च कर रहा हूँ, उसको बताना ये बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे लिए ये लाया वो लाया, क्योंकि वो हक तो वो दे रहा है आपका. तो हक देना तो भी एक बहुत बड़ा अजर है. तो ये दोनों तरफ से हो तो फिर और ज़्यादा आसानी हो जाती है. नंबर